Welcome to SIS Group, a business which started 50 years ago in Bihar with a team of 2 people from a small rented office by the first generation entrepreneur, Mr. Ravindra Kishore Sinha. His vision and leadership made history, and today SIS Group is recognized as a market leader in the Asia Pacific region, offering solutions in security, facility management and cash logistics. We at SIS Group are proud of our family culture, our values, trust, people focus and service spirit that has led SIS to be a socially responsible business enterprise. SIS Group provides more than 2,84,000 permanent employment opportunities that empower youth from the bottom of the pyramid of our society to build a better future for themselves and their families. This monumental journey from a bootstrapped startup to a market leader is a testament to Mr. Sinha's entrepreneurial spirit and the enduring legacy he has built. 22 सितंबर को SIS के स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। दिन कैसे बीता पता भी नहीं चला। मैं तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट था, अखबार में काम करने वाला दिन भर। 1971 में जब भारत बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो पूरे बिहार झारखंड से मैं अकेला वार कॉरेस्पॉन्डेंट यानी युद्ध संवाददाता चुना गया था और गया बांग्लादेश वार में मैंने काम किया। इसी समय जयप्रकाश नारायण का जेपी मूवमेंट शुरू हो गया। 4 लाख बांग्लादेश के पूर्व सैनिकों को आर्मी सेपरेट कर रही थी। कहा कि तुम ये करो, इंडस्ट्रीज को अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और इन गरीबों को जॉब की ज़रूरत है। तो 74 से लेकर 74, 75, 76, 77, 78, 79 6 साल ये 100% वॉलेंटरी सर्विस के तौर पे हमने SIS में काम किया। जब ये काम बढ़ने लगा तब जाके ये SIS का फॉर्मल एक संगठन था। शुरू में जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी और उस समय तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, तो हम लोग कैश में ही सैलरी देते थे। तो कैश की व्यवस्था बहुत मुश्किल पड़ती थी और इतना कुछ सिस्टमैटिक भी नहीं था कि जो क्लाइंट है वो टाइम से पैसा दे दे और जवानों को दिया जा सके। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि हमारे प्रमोटर के पास कोई कैपिटल नहीं था। कोई भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि कैपिटल की सख्त ज़रूरत है। सो वी वर अ कंपनी वर्चुअली विदाउट एनी कैपिटल। द ओनली कैपिटल ही हैड वाज हिज ओन एबिलिटी। एंड रिमेंबर दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, विच वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस as far as physical conflict was concerned. So one of the most neglected abilities of my chairman is his exceptional courage. हमारा घर 94 में पाटलिपुत्रा कॉलोनी में होता था। So sometimes वहाँ पे भी मीटिंग्स होती थी और वहाँ पे कई बार गार्ड्स का रिक्रूटमेंट या उनका पीटी परेड, ये सारी चीज़ें हमारे लॉन में होती थी। ऑफिस पीपल, दे वर लाइक घर के बड़ों के जैसे। पापा भी उनको ट्रीट करते थे, फाउंडर चेयरमैन। मदर भी वैसे ही उनको ट्रीट करती थी घर के बड़ों के जैसे, तो हम भी वैसे ही ट्रीट करते थे। देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन बिजनेस एंड फैमिली, इट वाज ऑल वन बिग फैमिली। जब पहला ट्रेनिंग सेंटर SIS का बना तो मैं SIS में नहीं था, तो धनबाद के पास एक खरखरी नाम की लोकेशन थी, वहाँ पर था। तो दैट्स वेयर द ट्रेनिंग सेंटर स्कीम स्टार्टेड। वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। I can share with you some of our early experiences. There was one bathroom and maybe 30 of us were attending a conference there. हमारे यहाँ एक यूनिक
रैंक है GTO ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर का, जो आज किसी भी सिक्योरिटी इंडस्ट्री के पास नहीं है। उसकी शुरुआत फर्स्ट बैच का 1986 में हुआ था। From October 89 onwards, SIS का wages computerized शुरू होने लगा। I was so lucky that I got the opportunity to run the wage cell, and I did it for 18 years till the ERP was introduced. So once we were talking and I made a presentation to him out of all the data that I assembled from the company, that his personal brand was huge, whereas the size of SIS was disproportionately small. I think he had called Rituraj for that presentation from London. And I told him after some years, SIS will run away, will move away from the entire security market, whereas your brand will probably grow many-fold. So what do you do as a successful entrepreneur, business manager? ये 5 साल में 2004 और 8-9 के बीच में SIS was ना जोग्राफिकल एक्सपेंशन ओवरड्राइव। हम लोगों ने अपने ब्रांच नेटवर्क को लगभग 100 ब्रांच 5 साल में पहुंचा है। हर एक साल 10-12, 15 ब्रांच, 20 ब्रांच एक साल में खोल के SIS really went to, मतलब पहली बार 2006-7 में हम वेस्ट इंडिया गए, बॉम्बे में ब्रांच खुला, अहमदाबाद गुजरात में ब्रांच खुला। साउथ इंडिया में भी SIS पहले से था, बेंगलोर में SIS काफ़ी समय से था, बट फिर अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में जाना, वो सब कुछ हुआ। हमने 2008 में ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिक्योरिटी कंपनी एक्वायर कर ली। वी डिडंट हैव द मनी टू एक्वायर। उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था और मैं ऑस्ट्रेलिया में था। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया था कंपनी एक्वायर करने के लिए। I involved in the fundraising. We have different banks lined up, but ultimately it is decided that we'll be taking fund from State Bank of India. And I got a call from Rituraj saying that विकास आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है। बैंक ने, जो बैंक के मैनेजर्स थे, उन्होंने एकदम क्लियरली पूछा कि सिन्हा साहब आप कर क्या रहे हो, आपने बिज़नेस इतने मेहनत से बनाई है और आपसे 10 गुना बड़ी कंपनी खरीदने का प्रयास आप लोग कर रहे हो, इसमें तो आपको अपना घर और ये सारा कुछ कोलैटरल में देना पड़ेगा, बहुत रिस्क नहीं ले रहे आप। मतलब उसके लिए रियली जो उसको बोलते हैं ना, कलीजा चाहिए, रिस्क एपेटाइट चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए अपनी टीम पे। I started almost the cash business in 2007. Before that, there was only one contract, and that was with the Bank of Baroda. We increased the volume of cash in transit, ventured out into the FLM business. The gradual initial story of SIS Cash was very, very fruitful, very encouraging. In 2008 and 9, I was given an opportunity to visit Australia along with the senior management, where I visited Guard cash management organization. In 2010, the JV started the process with Prosegur, and formally we signed a JV with Prosegur, which was second largest cash management company, especially in Latin America. We have been doing very well. As on today, we are number 2 in India as a cash management service provider.
First of all, SIS is the most tech-savvy guarding company, and SIS only have been thinking about the scales implementation. Already we have over 250,000 people in our payroll, and when it grows, and even if India grows at 12 to 15% level, so the size of the market will become huge. SIS has been founded on strong pillars of strength of values, culture and purpose. We started our international business journey back in 2008 with the acquisition of the Chubb business back then, which is now called as the MSS. And until 2017, it was pretty much Australia-centric business. But since then, we have gone into multiple countries as well. We've gone into Singapore, we have gone into New Zealand, and we have added much more segments as well to the normal security business. We have started doing emergency response and medical services. We've started doing patrols. We've started doing monitoring. And currently, as we stand in the international business, we are probably a true leader in the Asia Pac market. In 2016, SIS Group acquired DTSS, and post the acquisition, we found a permanent home. So in the last 7 years, we have found that nobody has left the system because of change in shareholding of the company. And I really attribute this to the people culture of SIS. I attribute this to the comfort that the SIS Group has given to each and every employee of DTSS and made them feel empowered, made them feel trusted, made them feel at home, and really that's the reason why nobody has left the system. Our journey thereafter has been that of becoming bigger and becoming better. And being a large company, being a large group, being in the business for more than 50 years, there are certain things we do very well on the compliance side, on the systems, on the technology. A company in which private equity investors came for the first time into this sector, and then we also became subsequently, we listed ourselves on the Indian stock exchanges. I think getting listed on Indian stock exchange is always a very proud moment. The day demonetization, we all have been informed internally by Chairman Sir, by Mr. Rituraj, that we have to support our customer even during the demonetization. None of the services should be halted or should be stopped during this period. SIS Prosegur was the only company which had supported wholeheartedly during entire demonetization period. डिमोनेटाइजेशन में अचानक से इस तरह का भूचाल मच गया था पूरा कंट्री में कि वो संभलना मुश्किल था। उस चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए डे टू डे फॉलो अप करना, उस चीज़ों को आगे बढ़ाना, कैसे होना है कैश, क्योंकि हम कैश इंडस्ट्रीज़ को लीड कर रहे थे और कैश इंडस्ट्रीज़ में डीमोनेटाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किसी भी तरह का कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाए। The period that stands out is the COVID time. Rituraj and I talk regularly, incessantly. We were concerned about the clients, the employees, but our foremost concern was taking care of our employees. Not just for the health, but for stability and continuation of the jobs. फर्स्ट जो हम लोग का ऑफिस जो था मलेश्वरम में था, उस समय हम लोग खाली 8 आदमी का स्टाफ होता था। एक छोटा सा घर को ऑफिस बनाए थे, तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा करियर भी। आज का दिन साहब का बदौलत से मैं यहाँ पर आके चेयर में बैठ के आप लोग के सामने बात करने का मौका भी मिला, और इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ तो फैमिली का जैसा हो गया। अभी यहाँ मैं 97 से मैं देख रहा हूँ, आज का दिन 2024 हो गया, अभी भी हम लोग का कंपनी फैमिली कल्चर में ही चल रहा है। अगर किसी को कुछ हुआ तो तुरंत
हम लोग एक आदमी का जगह में 50 आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगा। मैं SIS में चालक के पद पर हूँ। SIS कैश सर्विस में बहुत अच्छी कंपनी है। अभी तक हमको काम करने में बहुत अच्छा लगा और हमको बहुत अच्छा लग रहा है SMC में काम करते हुए, और बच्चा के हम बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं इसी पैसा से। SIS में ड्यूटी करने से मेरा बाल बच्चा परिवार सब सुखी है सर। लड़का लड़की को पढ़ाए, DLED लड़की को कराए, लड़का को ISC कराए SIS के बदौलत। और गांव घर में हम लोग जो कहते थे कि SIS हमको भी लगवा दीजिए, तो 10 आदमी को कम से कम हम इसमें जाके नौकरी लगवाए, और वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बंगलोर कोई दिल्ली में। मेरा संस्था बहुत छोटा था, आज के डेट में बहुत डेवलप कर लिया है, बहुत बड़ा हो गया है। आज की इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा संस्था चालू है। जय SIS, जय भारत। We have been able to give ample opportunity to employment to those people who are coming for underprivileged section. आज के में 2 लाख से ज़्यादा फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन SIS. I think that's one of the biggest contribution from SIS to this society. In my earlier companies too, I always had the aspiration to be amongst the top 10 greatest places to work in India, the GPTW survey. And we've been consistently ranking in the top 25-50, and in one year we were the top 5. That was definitely a moment. What differentiates SIS from the others? In my view, it is a very unique balance, yin and yang. It's got a perfect balance of systems and entrepreneurship. It's got a great balance of family bonding as well as a family that is performing. It's got a balance of individual contributions and team contributions. It's got a balance of knowledge on the ground as well as very strong professional management knowledge. It's a balance of young generation in the mid-20s, early 30s, and people in their early 50s, late 50s who have worked for 30 or more years. The best organization in the country, the best potential growth-oriented setup, best people in this particular system, and the working culture. The best part of SIS is the professionally managed but family culture approach. We are the largest player in Australia today. We are the largest player in New Zealand today. We are the largest player in India today. Now, this journey looks impressive in terms of data. What is more important and critical, I believe this is a story of very ordinary people achieving extraordinary results. और ऋतुराज तो उसको ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। मुझे उम्मीद है हमारे अफसरों से और हमारे जवानों से कि ऋतुराज सही रास्ते ले जा रहा है कि नहीं। आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, और खुशी होती भी है कि इतना बड़ा हो रहा है, इतना फ्लॉरिश हो रहा है। अब Almost 40 years now since the company was incorporated in 1985 as a private limited company. But in this long years, I think one of the greatest things that the chairman has instilled in the organization is the family culture. हम समझते हैं कि SIS तो वटवृक्ष है, वटवृक्ष तो बढ़ता जाता है और नई नई जड़ें फैलाता जाता है। ये तो संस्था समाज की हो गई है, तो हमारी है नहीं। मैं संस्थापक जरूर हूँ, लेकिन पूरा समाज है इसमें हमारे साथ। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और ईमानदारी पूर्वक SIS के काम को आगे बढ़ाते रहें।